but mathematics has been a problem, or I have been conditioned to think about like तेरा maths weak है, तेरा maths weak है. So I had -1 in CAT 2022 in mathematics, and this year I scored 12 marks. VARC सर आपका बहुत थैंक यू सर, वो एलिमिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था दो ऑप्शंस, तो VARC में सर 44 मार्क्स मिल गए, उसमें बहुत खुश हो गया मैं। सुपर सुपर, दैट्स वेरी वेल डन। तो मनोज, कैसा फील हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? हैप्पी? अच्छा फील हो रहा है सर। एंड मतलब यू गॉट एज व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग? Yes, but there were a few three to four silly mistakes which I did. Otherwise, the score could have been 95. I eliminated two of the options, but the remaining two were confusing, so I got a bit. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। So Manoj, first of all, which batch are you from? Elite batch, sir. Elite batch. So मतलब you started your preparation not so long ago also, but then you gave time to prepare. Yes. ठीक है। The last 2 months only I prepared seriously because my mother had met with an accident, so I had to take care of her for 3 months. So the studies were halted. I had started to study, but then the 3 months gap came in between, and then I resumed again. अच्छा, but Manoj, if I had to ask you in terms of, tell us about your journey, जहाँ पे if I were to ask you what was the most challenging part, या how did you overcome the most challenging part, या if you had to inspire somebody for CAT 2024, how would you talk about your journey? तो आप ऐसा क्या बोलोगे? What was the most important part? Sir, the most important part was I had quite a bit of confidence in my VARC abilities, because even without studying, I was ranked world number 11 in the spell bee competition. So I had no problems in that. Logic also, it was quite easy for me. Even last year I attempted that. But mathematics has been a problem, or I have been conditioned to think about like तेरा maths weak है, तेरा maths weak है. So it showed that in the last year's paper. So I had -1 in CAT 2022 in mathematics, and this year I scored 12 marks. The most tensed section was quant for me. So and but Rahul sir's and Vineet sir's shortcuts, those shorts they used to create and put it on YouTube, na, I have done them by heart. Those shorts I know by heart. All the shortcuts I could get from them, I have taken into account, and then every single formula, my thinking is such that if I lack in the aptitude abilities of quant, like which way to think, which way to go about solving the question. So I am like, if that is the point where I am weak, then what can I do? Every single formula is in my control, is learning every single formula there exists in the CAT examination. I learned them by heart and then tried to apply, and whichever, only arithmetic I used to find easy. algebra वाला क्वांट समझ में नहीं आता ज्यादा, तो आई सॉल्व एवरीथिंग इन अरिथमेटिक इटसेल्फ, बाकी किसी पे भी ध्यान नहीं दिया सर। फिर 5-6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, तो आई वाज वेरी नर्वस, लाइक आई वाज shaking after the paper got over. Then I saw the analysis videos और फिर अच्छा लगा कि नहीं, सबको ही डिफिकल्ट गया है, मैं ही अकेला नहीं। ठीक है, so, फिर 12 मार्क्स मिल गए सर, तो आपकी क्वालिफाई हो गया। यस, वेरी गुड। VARC सर आपका बहुत थैंक यू सर, वो एलिमिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था दो ऑप्शंस, तो VARC में सर 44 मार्क्स मिल गए, उसमें बहुत खुश हो गया मैं। सुपर, दैट्स वेरी वेल डन। And LRDI का anything that you tried and you succeeded? LRDI का सर मुझे ना टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था सॉल्व करने को, मतलब I could solve if I gave an hour to solve ना, I could solve the 4 sets, लेकिन जब पेपर आया सर एक भी familiar नहीं था, तो मैं randomly एक सेट चूज किया। मैं बोला कुछ भी हो जाए, अभी एक सेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिफिकल्ट जा रहा है, मतलब सबको डिफिकल्टी जा रहा हूँ। तो मैंने वो पकड़ा, मैं 30 मिनट्स सर वो सेट में लगा दिया, तो 30 मिनट्स लगा दिया और वो क्रैक हो गया सेट। तो इसलिए फिर मेरा ये चिंता खत्म हो गया कि मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा, 70% निकल जाएगा। तो फिर दूसरा वो भी लकीली मुझे वो राइड्स का मिल गया,
जो क्या वो पार्क, अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स वाला, और वो Right, right. 5 मिनट में सॉल्व हो गया सर, क्योंकि टेंशन खत्म हो गया था मेरा। तो 2 सेट क्रैक हो गए और 24 मार्क्स मिल गए, तो मैं ठीक हो गया सब। Superb, superb, superb. So, can you tell us what Yes. is your sectionals and your overall percentile, Avi? अभी सेक्शनल सर 44 मार्क्स इन VARC, 24 मार्क्स इन LRDI, LRDI, and 12 marks in quant. quant. So the percentile is 99.61 in VARC, 97 or 98 something in LRDI, and 87.09 in quant. And overall it is 99.38. Superb, superb. Very well done. And this is very, very impressive, by the way, Manoj. And see, this is also something very inspiring for everybody who will listen to you. जहाँ पे you managed to get -1 in maths से लेके +12, and that too in a time where the exam has been really difficult. But you didn't lose your calm, you didn't lose your focus, and that is also very, very Yes. important. Superb. I wanted to kind of just While connect with you. I didn't score even a single time 99, I didn't score 99 percentile even a single time in the 50 plus mocks that I gave. I was very tensed about it. But then ठीक है ना? in the ठीक है. final I did. Very good, very good. So see, that's what it is now. You did not get underconfident, you did not get overconfident. You balanced it out and you managed it. So that again speaks volumes. But we are super proud, Manoj. It was such an honor to have taught a bright kid like you. बहुत मजा आया. And you know what? So this is you, people like you, kids like you make our job so fulfilling. इतना satisfaction मिलता है ना, मतलब to kind of keep going on. ठीक है. So you do understand and remember and hope that that thing that CAT 2024 aspirants are watching you. अभी मनोज आप एक role model बन गए हो. So now you are responsible, remember, to be passing on your experience because आप भी लास्ट ईयर डरे हुए थे, सहमे हुए थे, ब्रांड न्यू थे, एंड अभी आप एक चैंपियन बन के खड़े हो. ठीक है. सो देयर बी अ लॉट मोर दिस थिंग वेयर यू विल बी शेयरिंग योर इंस्टेंसेस एंड यू बी शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस व्हिच आई थिंक इज प्रीटी ऑसम. ठीक है, बहुत बढ़िया. आई वांटेड टू काइंड ऑफ जस्ट रीच आउट, ऑब्वियसली पर्सनली कांग्रेचुलेट यू बिकॉज आई कुड नॉट हैव बीन मोर प्राउड. बहुत मजा आया, मतलब क्या इट वर्क था, मतलब हमारे सारे के सारे वो सेशंस एंड हमारे पोल्स एंड हमारे टैक्टिक्स एंड शॉर्टकट्स. सो एनीवेज इट वाज ऑल वेरी गुड. ठीक है, तो वील बी इन टच. अभी आपको अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लाइक एज वी ऑलवेज से. तो अभी तो कॉल्स आने दो, GDPI का सब आपको पता चलेगा कि इन टर्म्स ऑफ आपका कौन से कॉलेजेस का कॉल्स आ रहा है. वैसे सबको मोस्टली सारे तो आ जाने चाहिए होपफुली. सो अभी देयर बी अ लॉट ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग विद यू. देयर बी बिकॉज सी अभी तक हाफ द जर्नी इज डन, हाफ द बैटल इज वन. आपको भी कॉल आएगा. Yes. आप अभी वहां पे जब एंटर करोगे तो वापस आप ब्लैंक स्लेट के साथ एंटर करोगे ना मनोज. तो एनीवेज वी विल देन कनेक्ट ऑन दैट आराम से एंड एवरीथिंग. बट पहले आई थॉट कि आई शुड काइंड ऑफ एटलीस्ट कनेक्ट विद यू के लाइक मनोज दिल दिल खुश कर देता है यार. तो बहुत ज्यादा मजा आ गया एकदम ये रिजल्ट देख के एंड एवरीथिंग. सो प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एट होम एज वेल. दे हैव रेज्ड अ वेरी ब्राइट किड एंड क्रेडिट गोज टू देम आल्सो ऑफ कोर्स. जी सर जी. चलो, थैंक यू सो मच मनोज. प्लीज टेक केयर